enable it. Okay, so now we are on page 93 of the Hindi book. I repeatedly keep on showing the Hindi book. This is what we are, page numbers when we are referring, that is the reference we have with us. And as we discussed earlier in the last couple of meetings, from this week, we are sort of trying to leave the columns model. Earlier when we were present, I was presenting the screen, it had two columns. Left hand side was Hindi and right hand side was English. What I realized, having done it for a few months, that it was taking a lot of my time. I mean, almost an hour every week. First to transport this version to the columns version, then whatever changes we do during our meeting, then bring them back to this version. I wanted to be more productive. So, and we discussed among ourselves, and what we decided was that, yes, we'll give it a try. If it works well, we'll continue with this. If we find that we are finding it difficult, then we will sort of resume the columns model. So this is where we are on 6th August in our morning meeting. So I will straight away go to where we have to begin. So this is page 93, second paragraph. And just to connect it from the previous paragraph so that a continuity is there. So in this previous paragraph, what Babaji is saying in Hindi is that मानव की पहचान अपने में परिभाषा, आचरण, व्यवस्था में भागीदारी के रूप में स्वीकार होता है. मानव की परिभाषा मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला है. ठीक है, तो this is written in Hindi, and then there is a sentence which says कि समझदारी ही मानव परिभाषा के अनुसार प्रमाण हो पाता है, अन्यथा हम परिभाषा के अनुरूप प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं. So in English, when we translate it, where are we here? Definition of a human being is one who materializes ideas and authenticates mental well-being. है ना, मनाकार को साकार करना वाला, one who materializes ideas. So we as humans, understand that we have ideas and then we want to materialize those ideas. Okay, so this is the definition of humans, one who materializes ideas. Humans at some point conceptualize that they want to fly, and this initially it was an idea, and then they eventually made aeroplanes and balloons and whatever. Maybe at some point of time humans visualized or conceptualized that they want to have tall buildings, maybe 100 stories, 100 floors, and then they materialize those things. Okay, so the definition of humans is one who materializes ideas and authenticates well-being. And what Babaji has repeatedly said is this one part humankind has evidenced, like there is no doubt about it that we can do it and we have been doing it. This is the second part which has been challenging so far, the mental well-being, मनस्वस्थता. Okay, so मनस्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला. So we hope for mental well-being and we want to authenticate mental well-being. This is something which has been missing. And then this is connected with this last sentence. It is this understanding indeed which can be evidenced as per the definition of humans. Okay, so only with wisdom and understanding we can sort of live true to our definition of humans. Otherwise, it is not possible to present ourselves true to this definition, the definition which we saw here. It is only with wisdom and understanding that we can live true to this definition. Otherwise, not. Okay. This was what we have covered so far. Now we can continue with this. When I was looking at this format, one thing which I realized was
trying it out with myself, that here it will be good to read the full paragraph. In the previous model, we were reading sentence by sentence, and somehow in that sentence by sentence, line by line reading, the overall sense of the paragraph was lost. Yeah, so here when we read one full paragraph in a flow, I think it will be useful for all of us. So, maybe one of you can read it in Hindi and English, those who know Hindi, and then we can start discussing about it line by line. So, who wants to do? आप ही में से कोई करें, please. Hindi and English, paragraph by paragraph, and then we will discuss it. Yeah, I will do, भैया. हाँ, please, दीदी. मानवीयतापूर्ण आचरण को सह अस्तित्व रूपी दर्शन के आधार पर, जीवन ज्ञान के आधार पर पहचाना गया है। मानवीयतापूर्ण आचरण का पहला आयाम संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, मूल्यांकन करना, परस्परता में तृप्ति को पाना। दूसरा आयाम में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य करना। तीसरे आयाम में तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा करना। तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग का तात्पर्य परिवारगत आवश्यकता के अनुसार शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति में नियोजित करना। मानव समाज अखंड समाज ही होता है। समाज गति का तात्पर्य अखंड समाज के अर्थ में भागीदारी करना, अर्थात सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना। Humane conduct has been recognized on the basis of the knowledge of coexistence and of Jivan. First dimension of humane conduct is recognition of relationships, fulfillment of values, evaluation, and mutual happiness. Second dimension is righteous wealth, righteous marital relationship, and kindness in work and behavior. Third dimension is right utilization and security of resources in the form of body, mind, and wealth. Meaning of right utilization of resources is nourishment and physical protection of the family members as per family needs, as well as the deployment in societal functioning. Society is humane only if it is undivided. Societal functioning means participation for undivided society. In other words, participation in universal orderliness. बाकी में इसका मीनिंग बहुत अच्छे से फ्लो हुआ. Instead of reading up line by line. Yes, I also thought so. Thank you, Didi. So I think most of the sentences are straightforward, but even then, we look at them. मानवीयतापूर्ण आचरण को सह अस्तित्व रूपी दर्शन के आधार पर, जीवन ज्ञान के आधार पर पहचाना गया है. Okay, so humane conduct has been recognized on the basis of the knowledge of coexistence and, what we are seeing here is सहअस्तित्व रूपी दर्शन के आधार पर, जीवन ज्ञान के आधार पर. So these are two knowledges, knowledge of coexistence, and I think by reading or speaking this way may be better. आप बताइए. हाँ, this is better. Humane conduct has been recognized on the basis of the knowledge of coexistence and of knowledge of Jiva. Okay, so we understand the coexistence, existence as coexistence, and we understand Jivan, and then it clarifies to us what is that we have to do. Okay, who am I and what is this world? Then I see my role in this world. I understand myself, I understand this existence, and then I understand my role in this. So my role is what my conduct will be. Okay, so that will be the humane conduct. Okay, so only by understanding the coexistence, having the knowledge of coexistence and knowledge about myself, which is knowledge of Jivan, then humane conduct becomes clear. कुछ कह रहे हैं शिल्पा दीदी? हाँ, the knowledge of Jivan and the knowledge of Jivan.
and the knowledge of children. Okay. Okay. ठीक है. Right. Thank you. Then मानवीयतापूर्ण आचरण का पहला आयाम. Now मानवीयतापूर्ण आचरण, the human conduct, it has sort of three dimensions. So मानवीयतापूर्ण आचरण का पहला आयाम, first dimension is संबंधों को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना, मूल्यांकन करना, परस्परता में तृप्ति को पाना. Okay, so first dimension of human conduct is first dimension of humane conduct is recognition of relationships, fulfillment of values, evaluation, and mutual happiness. Okay, so fulfillment of values in relationship. This is the first dimension of human conduct. Okay, this has come repeatedly in Madhyas Darshan. This is being mentioned here also, being emphasized here. So, and we all have sort of, in a practical form, when I look at it, what I realized in my early days was, we all, in the absence of Madhyas Darshan, also we were doing something in our relationships. We were all doing something. Kuch na kuch to kar hi rahe the. What was missing earlier is that recognition of values was not there. Okay, this values part is the new thing here. There are specifically mentioned 18 values, 9 plus 9 in relationships. So those are the universal values in relationship. उसको पहचानते हैं जब हम, when we recognize them and then see in our human interactions, in our interactions and relationships on day-to-day basis, what I personally realized was that, this value part was missing. My intention was correct, but clarity was not there. So once these values become clear, then we actually, I personally had a sort of, relook at all the relationships. I actually started realizing what were the things which were needed in relationship, which were not in my focus. Okay, I was missing out on that. Okay. So we all are already doing something in relationships. What is additionally that Madhyas Darshan is saying? Madhyas Darshan is highlighting the exact universal values, 18 universal values to be exact, which are there. I think that as students of Madhyas Darshan, in our initial days, we must repeatedly look at those values. Total, there are 30 values. In relationship, there are 18 values. So उनको values को पहचान पाना, to recognize those values and then to fulfill them. This is the first. It will eventually lead to mutual happiness. Okay? Otherwise, it does not lead to mutual happiness. In spite of putting in a lot of effort, eventually, I also feel irritated. The other person also feels irritated. It feels like, the whole effort has gone waste. And it's not giving the desired results because the values part is being missed out. So this is the first dimension of human conduct. दूसरा आयाम में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य करना. तो इसमें थोड़ा सा भाषा में, like sentence का structure could be better, but otherwise जो भी main elements है वो आ गए हैं. So इसको ऐसा लिख रहे हैं. Second dimension is righteous wealth, righteous marital relationship, and kindness in work and behavior. Then the third dimension, तीसरे आयाम में तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा करना. Third dimension is the right utilization and security of body, mind and wealth. तन मन धन को बोल रहे हैं, body, mind and wealth. सदुपयोग का तात्पर्य परिवारगत आवश्यकता के अनुसार शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति में नियोजन करना. Okay, so there are these two segments here. सदुपयोग को दो parts में रखा. सदुपयोग का तात्पर्य, the first part, परिवारगत आवश्यकता के अनुसार शरीर पोषण, संरक्षण. Okay, so meaning of right utilization of resources is the first part, nourishment and physical protection of the family members as per family needs. Okay.
So nourishment has to be there and physical protection has to be there. In families, there are some people, the clear example is small children. Maybe they cannot even take care of their physical body. So we have to ensure their physical protection of the body. Okay, so this is the first part of utilization of resources within the family. Now the second part is और समाज गति में नियोजित करना, as well as in the deployment, as well as the deployment in societal functioning. Now this is where maybe some of you can give inputs. समाज गति के लिए societal functioning is the best, that came to my mind so far. समाज गति में नियोजित करना है ना, to deploy the resources in societal functioning. So this is the right utilization of resources. So first, within the families we use them. It is not first and second actually, but like point first and point second, not in the priority 1 and priority 2, but we need to deploy resources within the family for family needs and within the society for societal needs. Okay? So that the society keeps on functioning. So this is the sadupyog ka tatparya. This is the meaning of right utilization of resources. Hanji Shilpa Devi. I was just suggesting as well as their deployment instead of their karna hai to. There kar sakte, as well as their deployment. I'm okay with this. Okay. मानव समाज अखंड समाज ही होता है. So, हाँ जी, बताइए कृष्ण भैया. Yeah, meaning of right utilization of resources is nourishment and physical protection of the family members. Here we are using protection, and just above third dimension is right utilization and security. So can we use protection in place of security here also? Yes, that is a very good point. We should maintain consistency. Poshan Sanrakshan. Okay, so in Hindi, in Madhyas Darshan, there are two different words which come. One is Suraksha and one is Sanrakshan. Okay, so Suraksha ke liye we are using security and Sanrakshan ke liye we are using protection. Okay, so actually what is happening is here in Hindi itself it is used into the two different words are used. Tan man dhan रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा करना. Okay, तो ये अर्थ का सुरक्षा करना, तो सुरक्षा is security of resources and then शरीर का संरक्षण करना. Okay, so Suraksha and Sanrakshan, I don't know, there's a fine difference if we are able to understand it. Okay, so Sanrakshan is protection of the body. Okay, so protection and security. So security we are relating with Suraksha and protection we are relating with Sanraksha. Krishnan Bhaiya. Yes, Bhaiya, I think you are right. Because here also in Hindi we have two words यहाँ पे हम use कर रहे हैं. Honey, and not only in this paragraph, but overall in Madhyas Darshan also. Okay, so Sanrakshan is actually used in the sense of protection of the body. Okay, जैसे parents हैं, parents जो है they protect the child. Okay, security is like of the physical resources also. Like we use the word securing the borders, okay, the security of the building. So security and protection, there is a difference. उसी को सुरक्षा and संरक्षण जो है वो ऐसा करके यूज कर. हाँ, और यहाँ पे भैया धन भी आ रहा है इसमें साथ में, तो सिक्योरिटी ठीक है यहाँ पे मुझे भी अब लग रहा है. Yes, good observation, but then good discussion. मानव समाज अखंड समाज ही होता है. Now I think maybe like I interpreted it in one way, but
मे बी इफ कुछ और भी ध्यान में आए तो वो भी बता सकते हैं. सोसाइटी इज ह्यूमेन ओनली इफ इट इज अनडिवाइडेड. है ना. मानव समाज मतलब समाज को मानवीय तभी कहेंगे अगर वो अखंड या अखंडता की तरफ लेकर जाए. है ना. अदरवाइज वो मानवीय नहीं है. देन इट इज सेक्टेरियन. Then if it is not taking to undivided society, then it will undoubtedly take to dividing the society into sections. So that is sectarian mindset. So either the mindset is of undivided society, or the mindset is sectarian in nature. So sectarian mindset or undivided society mindset, ऐसा जो है कह रहे हैं. तो मानवीय समाज जो है वो तभी कहेंगे अगर वो अखंड समाज है. तो इसको लिख रहे हैं ऐसे, सोसाइटी इज ह्यूमेन ओनली इफ इट इज अनडिवाइडेड. समाज गति का तात्पर्य अखंड समाज के अर्थ में भागीदारी करना, अर्थात सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना. Societal functioning means participation for undivided society. Okay. So we all are participating in the society. Whether our participation is taking the society towards undividedness, or it is not, or it is taking in the other direction. In like that once this thought comes to our mind, then we can start reviewing our own actions also, our own participation. अर्थात सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना. इन अदर वर्ड्स पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सल ऑर्डरलीनेस. शिल्पा दीदी कुछ कह रहे थे. जी भैया, मैं कह रही थी सोसाइटी इज ह्यूमेन ओनली व्हेन इट इज अनडिवाइडेड. मतलब अगर इफ की जगह व्हेन यूज करना है तो यू कैन सी सोसाइटी इज ह्यूमेन ओनली व्हेन इट इज अनडिवाइडेड. ओनली व्हेन इट इज अनडिवाइडेड. I am okay with either. I think, as long as we are able to grasp the sense out of it, society is humane only when it is undivided. It conveys equally well. I am okay with this. Okay, so I think that we covered this paragraph. If there are any overall points from anyone, please let us know. Otherwise, we can move to the next paragraph. Spencer, you are the only one, Spencer and Estelle, who do not understand Hindi, but the translation conveys the meaning the way we have discussed. Yeah, I believe so. Yeah, I think it's makes sense. Now, isko kaun padega? Who will read this section? Hindi and English. Any volunteers? ये मैं पढ़ देता हूँ. हाँ जी, बढ़िया कृष्णन भाई. परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक समाज गति के अर्थ को ध्वनित करता है. ये ध्वनि परिवार में न्यूनतम होकर विश्व परिवार में सर्वाधिक विशाल हो जाती है. इस बीच क्रम विधि से परिवार व्यवस्था से परिवार समूह व्यवस्था, परिवार समूह व्यवस्था से ग्राम मोहल्ला परिवार व्यवस्था, ग्राम मोहल्ला परिवार व्यवस्था से ग्राम मोहल्ला परिवार सभा, ग्राम मोहल्ला समूह व्यवस्था से क्षेत्र परिवार व्यवस्था, क्षेत्र परिवार व्यवस्था से मंडल परिवार व्यवस्था, मंडल परिवार व्यवस्था से मंडल समूह परिवार व्यवस्था, मंडल समूह परिवार व्यवस्था से मुख्य राज्य परिवार व्यवस्था, मुख्य राज्य परिवार व्यवस्था से प्रधान राज्य परिवार व्यवस्था, प्रधान राज्य परिवार व्यवस्था से विश्व राज्य परिवार व्यवस्था तक बुलंद होती जाती है. यह व्यवस्था में भागीदारी की बुलंदी है. बुलंदी का मतलब मजबूती से है. इस प्रकार हर मानव अपनी पहचान को परिवारगत व्यवस्था से 10 सोपानी व्यवस्थाओं में पहचान बनाना सहज है. Beginning from family orderliness and going all the way till world family orderliness, the meaning of societal functioning reverberates everywhere.
being least in the family, these reverberations each reach their crescendo climax at the world family level. Between these two extremes, it keeps on increasing progressively from one, family orderliness to family cluster orderliness. Second, family cluster orderliness to village family orderliness. Third, village family orderliness to village cluster orderliness. Fourth, village cluster orderliness to village area orderliness. Fifth, village area orderliness to block family orderliness. Sixth, block family orderliness to block cluster orderliness. Seventh, block cluster orderliness to district family orderliness. Eighth, district family orderliness to state family orderliness. And ninth, state family orderliness to world family orderliness. This is the height of participation in orderliness. Height here indicates strength. In this manner, appreciation for all humans is possible as participants in beginning from family orderliness to any further stage in 10 stages orderliness. Okay, thank you, Krishan Bhaiya. So This is very nice, bhaiya. आपने 1, 2, 3 लिख दिया ना. It's really good. I also thought so. Yeah, I also thought. Very nice. Okay. मुझे भी ये लगा कि ऐसे करने से थोड़ा सा रीडेबिलिटी में भी और इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी. So, but here we have 9 and we are talking about 10 stages. Yes. So what we can do is, let me change the screen here. Now I have shared a PowerPoint slide. Can you see that, all of you? No. Okay. So, let me stop sharing, and then reshare that screen. Okay. Abhi dikh raha hai aapko? Okay. Yes. Okay. Okay. Now, this is the, the way, it can be represented. This 10-staged system or 10-staged orderliness, which is family-based self-governance system. So I have two slides here. One is in Hindi and the other is in English. Okay, so that we can look at the words also. So 10 sopaniye vyavastha, parivar mulak swarajya vyavastha. So we are saying 10-staged, 10-step system, family-based self-governance system. Now, what we are saying here is, what Babaji, the way he has proposed is that the first stage, which is at the bottom, consists of 10 persons, units of 10 persons, which we can broadly call a family. Okay, so each family, broadly we can say they have 10 members in the family. Okay, so the first stage of the overall system, overall orderliness, that is a family. Okay. Now, because and the last stage at the top, there we have the World Council actually. So in the world right now, there are the population is around 8 billion people, but let us assume that we are talking about a steady state population of the world, somewhere around 10 billion people. Okay, so there will be a World Council, which will be one in number, one World Council, okay, for all these 10 billion people. Now, there will be, the world may be divided probably based on the geographies in, again, vaguely speaking or broadly speaking, in 10 states. So each state will also have a council. Okay. So there will be, in all over the world, all over the globe, there will be 10 state councils. All over the, and then the next stage below the state is district. हिंदी में इनके नाम ऐसे दिए हैं: विश्व सभा, प्रधान राज्य सभा, मुख्य राज्य सभा, मंडल समूह सभा, मंडल सभा, ग्राम क्षेत्र सभा, ग्राम समूह सभा, ग्राम सभा, परिवार समूह सभा और परिवार सभा. Okay, so
like these are just names. We can change the names by mutual discussions, but I think the concept is more important than the name we give to each state. So we have World Council, we have State Council, we have District Council, we have Block Cluster Council, we have Block Council, we have Village Area Council, Village Cluster Council, Village Council, Family Cluster Council, and Family Council. So Family Council is of 10 persons. Then we can conceptualize that an immediate neighborhood, there may be 10 families which will sort of work together to look after the common neighborhood and the areas and the issues related to the common neighborhood. So that stage is family cluster. So a family cluster is 10 families make one family cluster. Then 10 family clusters will mean 100 families. So there will be around, so that what we are calling is village. In Hindi, Babaji has called it Gram Sabha. Okay. So ऐसा करके village council, then village cluster council, 10 villages make one village cluster, 10 village clusters make one village area, then 10 village areas make one block, then 10 blocks make one block cluster, and then 10 block clusters make a district, 10 districts make a district, a state, and 10 states make the whole world. इस तरह से 10 सोपानी व्यवस्था जो है 10 स्टेज सिस्टम 10 स्टेप सिस्टम, that is how it is conceptualized. Okay. In the next chapter, right now we are reading chapter number 7. So chapter 6 of the book. In chapter 7, there is a long explanation, almost 25 pages are there on this 10-step system itself. So right now, Babaji is just introducing the concept here. The detailing is coming in the next chapter. So when we'll get to there, we will see at each stage, what are the activities being handled, and what is the modus operandi, how everything will work. What are the planning aspects, what are the implementation aspects of all this, wo sara ka sara jo hai, that we will cover in the next chapter. Babaji has covered in the next chapter. So abhi ke liye I just wanted to show this diagram, then we can come back to our text. So परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक समाज गति के अर्थ को ध्वनित करता है. Beginning from family orderliness and going all the way till world family orderliness, the meaning of societal functioning reverberates everywhere. Now, यहाँ पर समाज गति के अर्थ को ध्वनित करता है. तो पिछले पैराग्राफ में भी समाज गति आया था. तो समाज गति का मतलब क्या हो गया कि all of us are part of some family, but then when we talk about the societal functioning, we are talking about our participation beyond the family. Okay. Now, to what extent that participation can be? It can be up to the second step. It can be up to the third step. It can be up to the fourth step, all the way up to the 10th step, the last step. So beginning from family orderliness and going all the way till world family orderliness, the meaning of societal functioning reverberates everywhere. Okay. इसका जो अर्थ है, उसकी ध्वनि जो है वो हमको सुनाई देती है. इसका अर्थ ध्वनित करता है. यह ध्वनि परिवार में न्यूनतम होकर विश्व परिवार में सर्वाधिक विशाल हो जाती है. So, being least in the family, these reverberations reach their crescendo or climax at the world family level. So when I participate in the family, my participation is at the minimum level. Okay, then it keeps on increasing. Okay, so यहाँ पर जो सर्वाधिक विशाल शब्द जो है उसके लिए there are two options. Crescendo looks with reverberations, crescendo matches better, but the sense is of the climax only. So I would like to
your inputs that in reading this sentence, which word looks better? Crescendo से चले या climax से चले या दोनों ही लेके चले? Can we continue with both? Any inputs? I don't think crescendo is something that is like reached. Like crescendo is just like the general increase, you know? The way up, and the climax is the top. Climax would be the final Okay. peak. So that matches better? Yeah. I think so. Okay. 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 So, and reach their climax at the world family level. Okay. इस बीच क्रम विधि से, okay, between these two extremes, है ना, इस बीच क्रम विधि से, so family on the one side, world family on the other side, in between these two, now Babaji is describing the stages. Okay, so between these two extremes, it keeps on increasing progressively from family orderliness to family cluster to village family to village cluster to village area to block family to block cluster block cluster orderliness to district family orderliness, district family to state family, and state family to world family orderliness. This is the height of participation in orderliness. यहाँ पर इसका ये सारा करने के बाद में विश्व परिवार व्यवस्था तक बुलंद होती जाती है, बुलंद होती जाती है. This is the height of participation in orderliness. यह व्यवस्था में भागीदारी की बुलंदी है. बुलंदी का मतलब मजबूती से है. In this manner, okay, sorry. This is the height of participation in orderliness. Height here indicates strength. So, बुलंदी का मतलब मजबूती से है. So, I mean, the person who is participating, the state of that person is also stronger as the participation goes to the next level. Okay, so typically the word we use is, talented people will manage larger things. So here, talent is probably what we are talking about, the strength. Okay, not the physical strength. हाँ जी. ये स्ट्रेंथ का कोई और हो सकता है थोड़ा सा. मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर वो फर्मनेस या कुछ इस तरह का इंडिकेट करना चाहते हैं. Yes. वो थोड़ा सा इससे स्ट्रेंथ से मजबूत शब्द देखना होगा. हाँ. Right. So that is why संदीप भाई आप सजेस्ट कीजिए फॉर्मनेस. अभी असल में मैं ना किचन में हूँ यहाँ छोटी में, तो मैं गूगल नहीं कर पा रहा हूँ. नहीं तो अगर स्ट्रेंथ के कुछ सिनोनिम्स मिल जाएं, शिल्पा दीदी आप थोड़ा सजेस्ट कर पाए. मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा फर्मनेस से जुड़ा हुआ है ये, मतलब जो इजीली मूव ना होने वाला, उस अर्थ में स्ट्रेंथ को यहाँ पे कहा जा रहा है. वैसा कोई वर्ड मिल जाए तो ठीक है. मेरे को तो फर्मनेस या रूटेडनेस, समथिंग लाइक दैट, जिससे ये आभास है कि when you are rooted in something, you are immovable or you are not easily distractible. Well, ठीक है. Somebody who is rooted in the base, strong. Yes. और किसी के मन में any other suggestions? If we can choose a better word than strength. Participation in orderliness, height of participation in orderliness. Okay, so height means something, some strength, some firmness. तो जैसे उन्होंने बोला ना, तो synonyms में the best I think is solidity. I don't know. तो बाकी तो they're not really making sense. जो बाकी synonyms है ना strength के. Solidity तो नहीं आएगा शायद. नहीं, solidity नहीं कन्वे कर पा रहे हैं. ठीक कह रहे हैं. But between strength and firmness, firmness को ले सकते हैं. या आप दोनों strength and firmness रख सकते हैं, या firmness भी ठीक है. देख लीजिए फॉर्म रख के कैसा और बताएं क्या लग रहा है रीडिंग में, कैसा ठीक लग रहा है. Between these two, what reads better? We all got the sense of it. The height of participation means some kind of a
strength or some kind of a firmness or some such quality. What is the best word to use here? भैया इन दोनों में से तो strength ही लग रहा था, firmness, no, it's not the height of participation here is firmness. Firmness तो नहीं, I don't think. That's my. Okay. Any other inputs? I'm finding strength better here. Strength. अभी strength लेके चलते हैं. Okay. In a Okay, democratic ठीक है, manner. strength ही लेके चलते है ना? And then, like, अब एक, once we know that, maybe we could do it better, all of us can continue to think about it later on also and give feedbacks offline also to me. इस प्रकार हर मानव अपनी पहचान को परिवारगत व्यवस्था से 10 सोपानीय व्यवस्थाओं में पहचान बनाना सहज है. In this manner, appreciation for all humans is possible as participants in beginning from family orderliness to any further stage in the 10-staged orderliness. अपनी पहचान को परिवारगत व्यवस्था से 10 सोपानी व्यवस्थाओं में पहचान बनाना सहज है. तो परिवार में तो इन ए फैमिली एवरीवन इज पार्ट ऑफ. Okay, so everyone is there in some family. Beyond that family, to some further step in the 10 stages, we make our sort of identity, or we get recognition, or we like appreciation for all humans. This is the word I used here. अपनी पहचान को बनाना सहज है. In this manner, appreciation for all humans is possible as participants in the system, beginning from actually in system. Yeah, this will be better. Participating in orderliness. We are still sort of, being here and there, sometimes using orderliness, sometimes using systems for Vyavastha. So as participant in orderliness, beginning from family orderliness to any further stage in 10-staged orderliness. ठीक लग रहा है ये इतना? Any overall comments here? एक क्वेश्चन आया था कि if there are 10 stages, why the serial number is stopping at 9? Right? So I think इसको थोड़ा सा mathematically सोचेंगे. So if we have to go from 1 to 2, okay, so the numbers are 2, but when we are describing, we are going from 1 to 2, it is only one phrase. Okay, so I have to go from 1 to 2 and 2 to 3, then the numbers are 3, but phrases are only 2. 1 Yes, to yeah. 2. Now it is clear. Now it is clear. And One, 2 to 3. One number will be count. 9. One number. So there will be one less when we are sort of, describing it like yes, this. Okay. Good. So we move to the next paragraph. Now for next paragraph, what we can do is isko thoda sa. I have to take leave now, bhaiya. I'll join you next problem. week again. ठीक है Sandeep. Thanks for joining. Okay. Who will read this paragraph? Any volunteers? मैं पढ़ देता हूँ सर. ठीक है दिव्या. प्रौद्योगिकी प्रक्रिया प्रणाली उसके साथ तकनीकी आरक्षण, यह कहाँ तक न्यायिक है? संपूर्ण ज्ञान लोकार्पित होना ही उसकी ख्याति है. लोकार्पण न हो पाना उसका ख्याति न होकर अज्ञान कहा जाता है. इस तर्क से यही स्पष्ट होता है प्रौद्योगिकी प्रणालियों का पेटेंटीकरण मानव के हित में नहीं है. तकनीकी का लोकव्यापीकरण ही उसका सम्मान है. इस क्रम से ज्ञान की 3 विधाओं को पहचाने हैं. अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, तकनीकी ज्ञान. इन तीनों प्रकार के ज्ञान का निपुणता, कुशलता, पांडित्य, लोकव्यापीकरण करने की विधि से ही
अभ्युदय होना स्वाभाविक है। अभ्युदय का तात्पर्य है सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक जीने की सहज प्रक्रिया, जिसमें पहले से जिक्र हुआ है किया हुआ प्रतिभा का 6 स्वरूप अपने आप में संतुलित रहना, प्रयोजनशाली रहना पाया जाता है। इस विधि से संपूर्ण मानव इस धरती पर समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व पूर्वक जीने का दिन उदय होगा। इस पर जन चर्चा से संगीतीकरण विधि प्राप्त करना आवश्यक है। Industrial processes and mechanism along with technological patents, how far is it justified? Reputation of all knowledge lies in its offering to people. If it is not offered to people, it is of no repute. It may even be called lack of knowledge. With this reasoning, it becomes clear that patenting of industrial processes is not conducive to humans. Dissemination of technology is indeed the tribute to technology. In this manner, knowledge has been categorized as knowledge of existence, knowledge of Jivan, and knowledge of technology. Enlightenment becomes possible by disseminating the efficiency, proficiency, and mastery of these 3 types of knowledge. Enlightenment means a way of living with all-round resolution, in which the aforementioned 6 merits are found to be in balance and with purpose. Thus, a day will dawn on this planet when all humans are able to live with resolution, prosperity, fearlessness, and coexistence. Through conversations, it is essential to find a harmonious way towards that. Good. Thank you, Divya. And it looks too good actually that we are sort of, in a small group, we are doing this bilingual reading, and we have, we have a person joining from USA and we have a couple joining from Canada. It really feels so good. Thanks to all of you, including everyone from India, but getting the global representation actually feels good. Divya is in USA, he is in California. So, प्रौद्योगिकी प्रक्रिया प्रणाली उसके साथ तकनीकी आरक्षण, यह कहां तक न्यायिक है? इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म along with टेक्नोलॉजिकल पेटेंट्स. ओके, ये तकनीकी आरक्षण जो है ना, ये पेटेंट्स को आरक्षण कह रहे हैं. इट इज नॉट रिजर्वेशन. नॉर्मली आरक्षण के लिए रिजर्वेशन जो वर्ड यूज होता है, लेकिन यहाँ पर बाबा जी ने आगे चल के पेटेंटीकरण कर ही दिया है, तो देयर इज नो डाउट दैट ये तकनीकी आरक्षण जो है ये पेटेंट को ही कह रहे हैं. So industrial processes and mechanism along with technological patents, how far is it justified? Babaji is questioning the concept or the logic behind patents. Okay. संपूर्ण ज्ञान लोकार्पित होना ही उसकी ख्याति है. Reputation of all knowledge lies in its offering to people. लोकार्पण ना हो पाना उसका ख्याति ना होकर अज्ञान कहा जाता है. If it is not offered, if it की जगह we can actually emphasize, if the knowledge is not offered to people, it is of no repute. It may even be called lack of knowledge. Okay. So I am very knowledgeable, but I will not share the knowledge. It's not an indication of knowledge. It's Babaji is saying that it may even be called lack of knowledge. Very, very, I think, hard-hitting what is the word I should say? Like critique, basically, on what is happening around us. इस तर्क से यही स्पष्ट होता है प्रौद्योगिकी प्रणालियों का पेटेंटीकरण मानव के हित में नहीं है. With this reasoning, it becomes clear that patenting of industrial processes is not conducive to humans. तकनीकी का लोकव्यापीकरण ही उसका सम्मान है. Dissemination of technology is indeed the tribute to technology. I think Babaji is talking about a lot of things which happen around us. Medicines are being made,
and then there are patents. So, medicine, if some company has sort of discovered a formula or something like that, then other companies cannot copy it. Yes, similarly, regarding softwares and many machines also, patents are there. So once somebody sort of gets a patent, then other people cannot copy it. Okay. So it is sort of the knowledge is reserved to a person or a small group of people. But what Babaji is saying is that if some human has found a better way of doing something, its true tribute of that knowledge is that knowledge is disseminated to everyone, to the whole mankind. Okay. To put roadblocks in that process is not right. Or Babaji is actually raising questions. We all can draw our own conclusions regarding this. इस क्रम में ज्ञान की 3 विधाओं को पहचानते हैं: अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, तकनीकी ज्ञान. In this manner, knowledge has been categorized as knowledge of existence, knowledge of Jivan, and knowledge of technology. I will have a tough time explaining it. I will also get my clarity from some other colleagues who are friends who are studying this content for a longer period. Knowledge को अभी तक हम 3 parts में देखते थे: अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान. So suddenly, instead of मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान को तकनीकी ज्ञान कह दिया है. So either we can relate the तकनीकी ज्ञान with मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान. So maybe or I don't know. So instead of humane conduct, which normally comes as 3rd part of knowledge, here what we are having is knowledge of technology. So anyway, this is what it is. So in this manner, knowledge has been categorized as knowledge of existence, knowledge of Jivan, and knowledge of technology. इन तीनों प्रकार के हाँ जी शिल्पा दीदी. नहीं भैया, मतलब it just struck me कि maybe Babaji here is, since he's talking of industrialization, that's why he is saying that there are 3 kinds of knowledge required for industrialization, which is, अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, and तकनीकी ज्ञान. I mean, that's how I interpreted it. Yeah, but Babaji has been very specific, or let's say very disciplined with use of words also. So knowledge को कहीं पे कुछ कह दें, कहीं पर कुछ कह दें. I have not seen that at other places. So this is one exception which I find कि जहाँ पे ज्ञान को ऐसे कह रहे हैं. Normally और कहीं पर भी आपने भी जैसे देखी है बुक्स, और कहीं पर भी ऐसे ज्ञान शब्द से छेड़छाड़ नहीं की है बाबा जी ने. ज्ञान इज वेरी क्लियरली अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान. सो either we have to figure out whether we can relate तकनीकी ज्ञान with मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, or I don't know. Okay, so अभी ऐसे ही चलते हैं. इन तीनों प्रकार के ज्ञान का निपुणता, कुशलता, पांडित्य, लोकव्यापीकरण करने की विधि से ही अभ्युदय होना स्वाभाविक है. एनलाइटनमेंट, अभ्युदय को एनलाइटनमेंट कह रहे हैं. एनलाइटनमेंट बिकम्स पॉसिबल बाय डिसेमिनेटिंग द एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी एंड मास्टरी ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज. ओके, सो निपुणता, कुशलता, पांडित्य, these 3 words also come, they are keywords in मध्यस्थ दर्शन. तो इसको निपुणता, कुशलता, पांडित्य को अभी ऐसे लेके चल रहे हैं: एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी एंड मास्टरी. हाँ जी शिल्पा दीदी. भैया पहले तो अभ्युदय को ऑल राउंड रेजोल्यूशन यूज करते थे ना शायद. हाँ दीदी, वो ना 2 चीजें हैं. ऑल राउंड रेजोल्यूशन जो है वो सर्वतोमुखी समाधान के लिए भी यूज कर रहे हैं. ओके, तो सर्वतोमुखी समाधान, तो समाधान इज रिजोल्यूशन, सर्वतोमुखी इज ऑल राउंड. ओके, सो व्हेन ओनली अभ्युदय इज कमिंग, उसको ऑल राउंड रिजोल्यूशन कर लेते हैं. बट इफ इन दिस वन सेंटेंस ओनली अभ्युदय इज आल्सो कमिंग एंड सर्वतोमुखी समाधान इज आल्सो कमिंग, so the second closest word which we are trying is enlightenment.
ना सर्वतोमुखी समाधान मतलब everyone, a person getting complete resolution and then everyone getting complete resolution. So that is उसको enlightenment कह रहे हैं basically. जैसे चमक जाता है ना, जी भैया। प्रकाश हो गया, so उसको ऐसा कह रहे हैं. So enlightenment becomes possible by disseminating. ये हो गया. Enlightenment means a way of living with all-round resolution, है ना. अभ्युदय का तात्पर्य है सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक जीने की सहज प्रक्रिया, जिसमें पहले से जिक्र किया हुआ प्रतिभा का 6 स्वरूप अपने आप में संतुलित रहना, प्रयोजनशील रहना पाया जाता है. तो ये 6 स्वरूप क्या है? ऑटोनोमस पर्सन, स्वायत्त मानव के जो 6 प्रतिभाएं हैं, है ना, वो एक्चुअल में 5 हैं, कहीं कहीं पर 6 आया है. तो कई बार 5 से ही, मतलब 5 से ज्यादा सटीक चलता है. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी आर टॉकिंग, बाबा जी इज टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दैट. तो जो 5 या 6 हैं, 6 जिक्र, जो 6 का जिक्र हुआ है, ये अपने में संतुलित रहना, प्रयोजनशील रहना पाया जाता है. In which the aforementioned 6 merits are found to be in balance and with purpose. Okay, तो ये 6 merits कौन से हैं? This we will see in the next paragraph. इस विधि से संपूर्ण मानव इस धरती पर समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व पूर्वक जीने का दिन उदय होगा. Thus, a day will dawn on this planet when all humans are able to live with resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. इस पर जन चर्चा से संगीतीकरण विधि प्राप्त करना आवश्यक है. Through conversations, it is essential to find a harmonious way towards that. Okay, so that day will dawn, but then how can we reach there in a harmonious way? This is what Babaji is prescribing or recommending or highlighting. This is what the content of conversations needs to be. Okay, right now content of conversations is mostly in 4.5 activities. So जीवन क्रिया में से जो deluded human का 4.5 क्रिया रहता है ना, प्रिय हित लाभ में जीना, है ना, वो वाला जो रहता है, रूप पद धन बल के आधार पर जीना, वो जो है वो उस पर ही ज्यादा फोकस है. हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू लुक गुड, ऑन द लुक्स एंड अपीयरेंस पार्ट, उस पे ज्यादा फोकस है. एंड दिस फोकस ट्रांसलेट्स और इज ऑब्जर्वेबल इन द डे टू डे इंटरेक्शंस आल्सो. I started looking at the media advertisements once my attention was drawn to it. I started looking at the, otherwise what we see in movies. Mostly the deluded program is what is being in conversations, okay, in mutual discussions. So Babaji is saying is, discussions or conversations have to be aligned with purpose. And what is the purpose? Purpose जो है समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व, resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. So the discussions also have to be aligned with purpose. The discussions, the conversations, the dialogues, they are very important too. We are sort of wasting it in our life. I mean, this is precisely what I realized within myself, going through this book or going through Madhyas Darshan literature. ये इसका जो काम है ना डायलॉग्स वाला, इससे समझदारी वाला कंटेंट, द कंटेंट ऑफ विजडम, द कंटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन कन्वर्सेशंस, नॉट ओनली द फिजिकल वर्ल्ड. इतना जो है वो इस पैराग्राफ से निकल के आया. So, any comments or any observations or any clarity, any further discussion required, we can do, or we move to the next point, next para. Okay, I think we can move. I have a question. Oh. Yeah, please. Usually the 3 knowledge is existence, jivan, and human conduct. You know why in this context the 3rd is technology?
Yeah, I already apologized for that. I can't explain it. I am equally confused. Okay. So this is Oh, no the problem, only no place. problem. Yeah. Yeah. This is the only place in whole Madhyas Darshan where I see that Babaji has described knowledge uh, as something different than what you just said. Yeah. Okay. Okay, so even I can't explain it. I'll consult someone and ask them how they look at it. Okay. So we can move further. 1 second. So this we had taken to the next page. इसको वापस ले जाते हैं. Yeah. Okay. So प्रतिभाओं का पहचान, recognition of talents. अब यहाँ से who will read this? Any volunteers? नहीं तो जिन्होंने पहले पढ़ा है वो रिपीट भी कर सकते हैं. Okay, let me do it, भैया. Please, देव भाई. स्वयं पर विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, समझदारी और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन, यह 6 स्वरूप प्रतिभा का प्रमाण होता है. प्रतिभा मूलतः समझदारी ज्ञान ही है. सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है. यह ही मूल प्रतिभा है. यह प्रतिभा नियति विधि से उपलब्ध है. नियति विधि का तात्पर्य नित्य निरंतर शाश्वत रूप में विद्यमान है ही, क्योंकि सह अस्तित्व नित्य विद्यमान है. सह अस्तित्व में जीवन भी नित्य स्पष्ट है. इस प्रकार प्रतिभा नित्य वर्तमान होना स्पष्ट है. ज्ञान और दर्शन ही संपूर्ण प्रतिभा का स्वरूप है. प्रतिभा का स्वरूप ज्ञान और दर्शन के प्रतिपादन का प्रयोजन प्रमाणित करने की प्रवृत्ति के रूप में भी पहचाना गया है. इन मुद्दों पर अच्छी तरह से जन चर्चा आवश्यक है. ऐसी शाश्वत प्रतिभा मानव परंपरा में ही प्रमाणित होना पाया जाता है. इसका कारण परिशीलन पूर्वक यह पाया गया है. मानव शरीर परंपरा में ही जागृत जीवन सहज संपूर्ण ज्ञान उद्घाटित होने की व्यवस्था है. शरीर रचना इस प्रकार है कि जीवन जागृति पूर्वक अथवा समझदारी पूर्वक संपूर्ण ज्ञान को उद्घाटित कर सकें. इसका प्रमाण यही है कि हर मानव कल्पनाशील और कर्म स्वतंत्र है. Okay, talent is evidenced in these 5 forms: self-confidence, respect for excellence, balance in wisdom and personality, sociability in behavior, and self-reliance in occupation. Basically, talent is nothing but wisdom or knowledge. All the knowledge comprises knowledge of existence, knowledge of Jivan, and knowledge of human conduct. This indeed is the underlying talent. This talent is naturally available by way of destiny. Meaning of the way of destiny is eternal, continuous, perpetual presence of something. Perpetual presence of something. As the coexistence is eternal, and the eternal presence of Jivan in coexistence is also clear. Thus, the eternal presence of merit is also clear. Knowledge and philosophy is the true form of all talent. Talent has also been understood as, I'm sorry, what? Proclivity. Talent has also been understood as proclivity towards authenticating the purpose of rendition of knowledge and philosophy. Thorough conversations on these points are needed.
Evidence of such living talents is found only in human tradition. It is due to the fact that the provision of unveiling of complete knowledge for awakened Jivan is found only in the human order. Natural design of the human body is such that if it can unveil complete knowledge by way of awakening and understanding imagination and free will in all humans is its evidence. Thank you. Okay, thank you, Dev bhai. So let's look at it line by line. Okay, so स्वयं पर विश्वास. See, no, this is another point here. ये 6 प्रतिभा बोल रहे हैं. 6 प्रतिभा मतलब 6 talents, but actually they are 5. स्वयं पर विश्वास is 1. श्रेष्ठता का सम्मान is 2. समझदारी और व्यक्तित्व में संतुलन is 3. व्यवहार में सामाजिक is 4. एंड व्यवसाय में स्वावलंबन इज 5. तो ये है 5. ये कई जगह पे ना मतलब ड्यू टू सम रीजन ये 6 आ जाता है. ये 6 प्रतिभा 6 स्वरूप प्रतिभा का प्रमाण होता है. सो इसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं. टैलेंट इज एविडेंस्ड इन दीज 5 फॉर्म्स. सो I was sort of not sure that if there is something very apparent as a mistake, should we translate the mistake, or at least we can add value while translating and correct it. We cannot correct the, we do not want to touch the original written by Babaji, but when we are translating, we can take such liberties, in such situations, probably. So I'm also deliberating on that. So ऐसा लिख रहे हैं, talent is evidenced in these 5 forms. What are these 5 forms? Self-confidence, स्वयं पर विश्वास. Respect for excellence, श्रेष्ठता का सम्मान. Balance in wisdom and personality, समझदारी और व्यक्तित्व में संतुलन. व्यवहार में सामाजिक, sociability in behavior. व्यवसाय में स्वावलंबन एंड सेल्फ रिलायंस इन ऑक्यूपेशन. ओके, ये स्वायत्त मानव के 6 गुण हैं. ऑटोनोमस पर्सन आल्सो बाबाजी हैज डिफाइंड लाइक दिस. प्रतिभा मूलतः समझदारी ज्ञान ही है. बेसिकली टैलेंट इज नथिंग बट विजडम और नॉलेज, है ना. समझदारी, ज्ञान, सो विजडम और नॉलेज. सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ही संपूर्ण ज्ञान है. यह ही मूल प्रतिभा है. All the knowledge comprises knowledge of coexistence, knowledge of जीवन and knowledge of human conduct. This indeed is the underlying talent. यह ही मूल प्रतिभा है. मूल प्रतिभा है. अंडरलाइंग टैलेंट ठीक है या कुछ और करें इसके लिए? यह ही मूल प्रतिभा है. दिस इंडीड इज टैलेंट. सिर्फ टैलेंट कर दें, अंडरलाइंग टैलेंट है मूल के लिए. क्या लगता है? कोर कर सकते हैं. कोर टैलेंट. दिस इज द कोर, CORE. दिस इज द कोर टैलेंट. ओके, कोर टैलेंट. ओके, और कुछ आता हो ध्यान में? Can we use basic? मतलब दिस इज द बेसिक टैलेंट जो है ना, वो कहने के बजाय मेरे को लग रहा है कि सेंस ये आ रहा है बेसिकली दिस इज टैलेंट. Yes, I also feel the same way. तो जैसे हिंदी में है ये ही मूल प्रतिभा है, इसकी बजाय मूल में यही प्रतिभा है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा. ठीक है, ये चर्चा में अच्छा हो गया. सो बेसिकली दिस इंडीड इज टैलेंट. Or this is the root of talent. What, sorry, say it again, please. Oh, I said, or this is the root of talent. Oh, this is the root of talent. I don't know the Hindi. I just I hear the word mool we are in also there, trying. and
Yeah, basically this is the root of talent. बताइए बाकी साथी, शिल्पा दीदी, नीरू दीदी, अगर देव। रूट है तो फिर फाउंडेशन भी हो सकता है. If you are using root, it can be foundation also. I don't know. And it can be talent in root. Here we can use original or natural. Maulik. मौलिक वाला पार्ट भी है इसमें. यस, मौलिक वाला भी है. तो अभी ऐसा ही लेके चलते हैं. बेसिकली दिस इंडीड इज टैलेंट, है ना, यह ही मूल प्रतिभा है. हाँ, ये ठीक साउंड कर रहा है. बेसिकली दिस इंडीड की भी जरूरत नहीं. बेसिकली दिस इज टैलेंट, है ना, यह ही मूल इंडीड प्रतिभा अच्छा है. लग रहा है भैया, मतलब मेरे को तो अच्छा लग रहा था. दिस इंडीड इज टैलेंट. इंडीड अच्छा. हाँ, I think it flows nicely. ओके. ओके, ठीक है, मतलब अभी ऐसा लेके चलते हैं. एंड फिर आगे देखते हैं. अभी यह प्रतिभा नियति विधि से उपलब्ध है. दिस टैलेंट इज नेचुरली अवेलेबल बाय वे ऑफ डेस्टिनी. उपलब्ध है, इसके बाद में फुल स्टॉप होना चाहिए, विराम होना चाहिए, वो है नहीं. नीति विधि का तात्पर्य नित्य निरंतर शाश्वत रूप में विद्यमान है. ओके. मीनिंग ऑफ द वे ऑफ डेस्टिनी इज इटर्नल कंटिन्यूअस परपेचुअल प्रेजेंस ऑफ समथिंग. कोई भी चीज जो है जो हमेशा रहती है ना, तो हमेशा के ये अलग अलग ये शब्द आए. बेसिकली नित्य निरंतर शाश्वत. सो इटर्नल कंटिन्यूअस परपेचुअल प्रेजेंस ऑफ समथिंग. क्योंकि सह अस्तित्व नित्य विद्यमान है. एज द कोएग्जिस्टेंस इज इटर्नल, सह अस्तित्व में जीवन भी नित्य स्पष्ट है. एंड द इटर्नल प्रेजेंस ऑफ जीवन इन कोएग्जिस्टेंस इज ऑल्सो क्लियर. इस प्रकार प्रतिभा नित्य वर्तमान होना स्पष्ट है. Thus the eternal presence of merit is also clear. Okay, तो coexistence is clear. Eternal presence of जीवन in a coexistence is also clear. Thus the eternal presence of merit is also clear. Merit जो है ये, इसको प्रतिभा को, ये इसका टाइटल ही दिया हुआ है, प्रतिभाओं की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट्स. भैया इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, ये एक्चुअली समझ नहीं आई मुझे. प्रतिभा नियति विधि से विद्यमान है, और ये इसमें पापा जी क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. एक सेकंड, मैं एक मेरे को करते करते ऐसा लगा कि हम प्रतिभा के लिए ना टैलेंट वर्ड यूज कर रहे हैं. अब यहाँ पे आते आते पता नहीं क्यों प्रतिभा की जगह मेरिट हो गया यहाँ पर. तो यहाँ भी टैलेंट ही लिखेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी सी रहेगी, एक ना कंसिस्टेंसी रहेगी वर्ड के रूप में. ये ना मैं नीरू दीदी, योर क्वेश्चन इज कि ये टैलेंट की इटर्नल प्रेजेंस जो है वो कैसे कह रहे हैं. तो एक्चुअल में जो जिसको प्रतिभा कह रहे हैं, ये प्रतिभा जो है ये जीवन का ही पार्ट है. Okay, प्रतिभा is, या talent is, it is residing in जीवन. It is not residing in body. इतना तो क्लियर है ना नीरू दीदी? ठीक 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 है. Now coexistence is clear and coexistence is continuous. जीवन is clear, जीवन is in coexistence, and जीवन is also eternal, immortal,
that is also clear. And the talent resides in Jivan. So Jivan, hence it is proven that talent is also continuous. It is eternal. क्या हम जीवन में जो टैलेंट की बात कर रहे हैं, हाँ जी, ये उसके बल और शक्तियों की बात है? ये अभी यहाँ पर टैलेंट की बात, ये वाले 5 जो मेरिट्स हैं इनको कह रहे हैं। अच्छा, है ना, ये अच्छा, स्वयं right. पर विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, ओके है ना, ओके ये ओके, 5 राइट, इनको टैलेंट कह रहे हैं। ठीक है, It- ठीक। अब it यहाँ resides आई in थिंक Jivan. आई डिड नॉट रिलेट टू दिस। अब मुझे समझ आ गया हाउ इट है ना? इज, एग्जिस्टेंस में है इसलिए। ठीक ठीक ठीक, अब है समझ ना, आ तो गया, बढ़िया। जीवन इज इटर्नल एंड दिस रेसिड्स इन जीवन, सो दिस इज आल्सो इटर्नल। राइट राइट, ठीक है। Babaji ठीक है भैया। sometimes on very abstract things he proves it mathematically also. So ये वाला it's a very like and I see it as जैसे scientific proof रहता है ना, उस तरह से बाबाजी इसको रख रहे हैं। जैसे जीवन इक्वेशन रखते हैं। हाँ, जीवन इज इटर्नल, और ये हम्म। टैलेंट जो है वो जीवन का पार्ट है, इट रेजाइड्स इन जीवन, सो देन टैलेंट इज आल्सो इटर्नल। This is like saying भैया कि A is equal to C, B is equal to C, therefore A is equal to B. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो ऐसे इसको देख रहे हैं। तो इस प्रकार प्रतिभा नित्य वर्तमान होना स्पष्ट होता है। बताइए बाकी साथियों को भी ये क्लियर हो रहा है, ये वाला जो इक्वेशन के रूप में कह रहे हैं? इट वॉज ए गुड पॉइंट रेज्ड बाय नीरू दीदी। जी भैया। ठीक है, ठीक है। ज्ञान और दर्शन ही संपूर्ण प्रतिभा का स्वरूप है। नॉलेज एंड फिलॉसफी इज द ट्रू फॉर्म ऑफ ऑल टैलेंट, है ना। ज्ञान और दर्शन को बोला, नॉलेज एंड फिलॉसफी। प्रतिभा का स्वरूप ज्ञान और दर्शन के प्रतिपादन का प्रयोजन प्रमाणित करने की प्रवृत्ति के रूप में भी पहचाना गया है। Okay. Talent has also been understood as proclivity or tendency towards authenticating the purpose of rendition of knowledge and philosophy. संपूर्ण ज्ञान और दर्शन के प्रतिपादन होता है टू कम्युनिकेट समथिंग। ओके, सो आई सॉर्ट ऑफ यूजिंग हियर वर्ड रेंडिशन, बट आई थिंक देयर कुड बी बेटर वर्ड्स। आप कुछ बताएं, सजेशंस आर वेलकम। इसका ज्ञान और दर्शन का प्रतिपादन जो है ना, प्रतिपादन करना, उसको कम्युनिकेट करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसका व्याख्या करना, उसको दूसरों को ट्रांसफर करना, उसको प्रतिपादन कह रहे हैं। तो टैलेंट हैज आल्सो बीन अंडरस्टूड एज प्रोक्लिविटी। अभी जब देव भाई पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि प्रोक्लिविटी वर्ड को भी थोड़ा सा जो है ना, वी कैन लुक एट इट। एक्चुअल में जो प्रवृत्ति शब्द है ना, प्रवृत्ति शब्द को 2 तरह से मध्यस्थ दर्शन में लिया गया है। वन इज, प्रवृत्ति का एक नॉर्मल इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है टेंडेंसी, बट टेंडेंसीज आर नॉर्मली सीन ऑफ 2 काइंड्स। One is tendency, humane tendencies, and the other are inhumane tendencies. Okay. So proclivity is a word which I tend to prefer whenever we are talking about humane tendencies. Proclivity का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो pro is mostly being used for forward movement. So whenever we are progressing something, there we are using the word pro. So proclivity is moving forward. So the tendency which takes us forward, which are the good tendencies, which are the humane tendencies. जब प्रवृत्ति को ह्यूमेननेस की टेंडेंसी के साथ में रखते हैं तो आई प्रेफर द वर्ड प्रोक्लिविटी, एंड अदरवाइज उसको जो है नॉर्मल सेंस में टेंडेंसी लेकर के चल सकते हैं। So these are the options we have. Finally, whatever we will use is a separate point, but इसको इस तरह से देख सकते हैं। So the good tendencies are proclivities, so to say. आप भी डिक्शनरी में भी मतलब देखना। Let me do it right away actually.
प्रोक्लिविटी अगर हम देखें, सो प्रोपेंसिटी भी आ रहा है भैया एक। प्रोपेंसिटी भी आ रहा है, बिल्कुल जी। प्रोपेंसिटी भी मिलेगा। एक सेकेंड, लेट मी शेयर इट, लेट मी शेयर इट। Okay. So proclivity, what it says is proclivity. Okay. So proclivity is clivus. It proclivity is the clivus. Clivus is the Latin word for slope. Okay. So tendency is like whether there is a tendency to slope downwards or there is a tendency to slope go upwards, मतलब इस तरह से जो है इसको देख सकते हैं। सो प्रो इज मोस्टली फॉरवर्ड, इसका वर्ड हिस्ट्री अगर हम देखें, सो प्रो इज फॉरवर्ड। ओके, सो द स्लोप विच टेक्स अस अपवर्ड्स और फॉरवर्ड, उसको प्रोक्लिविटी कह सकते हैं। आप ये देव भाई दूसरा कह रहे थे प्रोपेंसिटी, दैट ऑल्सो इज ए वर्ड विच आई हैव कंसिडर्ड अर्लियर, प्रोपेंसिटी। So this is often intense natural inclination or preference. This also is a tendency. ठीक है, इसको we all can look at these words later on and then we can see which fits the bill better. Talent has also been understood as proclivity towards authenticating the purpose of rendition of knowledge and philosophy. Okay, प्रतिपादन के लिए जो है अभी, हाँ जी शिल्पा दीदी। No, I just actually searched की propensity versus proclivity. तो इसमें आया कि propensity implies a deeply ingrained and usually irresistible inclination. Proclivity suggests a strong natural propenness, usually to something objectionable or evil. So I don't know ये क्यों आया। ये भी Merriam-Webster का ही है। हाँ ठीक है। Yes, so but I think that if we can associate a meaning with a word and we can define it, Babaji has also done it. In Madhyas Darshan, he has taken the words from the normal Hindi language and then redefined them. So मेरे को proclivity में pro शब्द जो था, जो forward वाला उसका sense था, उसके साथ में मेरे को अच्छा एक relationship लगा, which takes us forward. Towards forward is progress, forward is humaneness. तो वो तो प्रो तो उसमें भी है ना, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी में भी है, प्रो उसमें भी है, बिल्कुल ठीक बात है। सो इट्स चूजिंग ऑफ वर्ड्स। आप बताइए, आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर प्रेफरेंस, प्रोक्लिविटी एंड प्रोपेंसिटी में से जो ठीक लगे वो वाला लेके चल सकते हैं। मतलब मैं तो इसी को पढ़ रही थी, तो इसमें आ रहा है कि प्रोक्लिविटी इज समथिंग ऑब्जेक्शनेबल और इविल भी हो सकता है, और and प्रोपेंसिटी propensity में is deeply ingrained and usually irresistible inclination. So maybe that is more positive. But I don't know. I'm just just reading off the net. The maybe Merriam-Webster का ही है. हाँ. So propensity understood as propensity towards authenticating the purpose of rendition of knowledge. ठीक है, मतलब अभी ऐसा लेके चलते हैं। ठीक है, इन मुद्दों पर ये रेंडिशन शब्द ठीक लग रहा है प्रतिपादन के लिए या कुछ और करें? अभी के लिए ऐसे लेके चलते हैं, है ना, उसको कम्युनिकेट करना है, उसको बताना है, तो रेंडिशन। इन मुद्दों पर अच्छी तरह से जन चर्चा आवश्यक है। थॉरो डिस्कशंस आर नीडेड, आर on these points are needed, thorough conversations are on these points are needed. ऐसी शाश्वत प्रतिभा मानव परंपरा में ही प्रमाणित होना पाया जाता है।
evidence of such living talents is found only in human tradition, है ना? ऐसी शाश्वत प्रतिभा, अब शाश्वत प्रतिभा में यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं किसको कह रहे हैं, मतलब लिविंग मॉडल्स को लिविंग ह्यूमंस को कह रहे हैं या ऐसे जनरल सेंस में कह रहे हैं, मतलब शाश्वत प्रतिभा को अदरवाइज हम इटर्नल टैलेंट्स भी कह सकते हैं। तो बट आई वाज नॉट श्योर कि इटर्नल टैलेंट्स यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। एविडेंस ऑफ सच लिविंग टैलेंट्स इज फाउंड ओनली इन ह्यूमन ट्रेडिशन, अदरवाइज शाश्वत के लिए हम ऐसे भी कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, इटर्नल। मेरे को इटर्नल थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। है ना? शाश्वत का यहाँ पर मुझे ऐसा लगा जीता जागता प्रमाण, यहाँ पर मतलब इस सेंस में मैं इसको ऐसा इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि ऐसे जीते जागते प्रतिभा जो है वो मानव परंपरा में ही प्रमाणित होना पाया जाता है। इसका कारण परिशीलन पूर्वक यह पाया गया है, मानव शरीर परंपरा में ही जागृत जीवन सहज संपूर्ण ज्ञान उद्घाटित होने की व्यवस्था है। It is due to the fact that provision of unveiling of complete knowledge for awakened जीवन is found only in the human body, है ना? संपूर्ण ज्ञान उद्घाटित होने की व्यवस्था, है ना? प्रोविजन ऑफ अनवेलिंग ऑफ कंप्लीट नॉलेज, तो ये थोड़ा सा ऐसा बनाया है, संपूर्ण ज्ञान उद्घाटित होने की व्यवस्था है। शरीर रचना इस प्रकार है कि जीवन जागृति पूर्वक अथवा समझदारी पूर्वक संपूर्ण ज्ञान को उद्घाटित कर सके। Natural design of the human body is such that it can unveil complete knowledge by way of awakening and understanding. जागृति पूर्वक अथवा समझदारी पूर्वक, है ना? by way of awakening and understanding. इसका प्रमाण यही है कि हर मानव कल्पनाशील और कर्म स्वतंत्र है। Imagination and free will in all humans is its evidence. This brings us to the end of chapter 6. So abhi isko, today is 6th, so next will be 1 second 7. Not 7, sorry, 13. 13. हाँ जी, शिल्पा दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ भैया, I was just going back to that sentence इस मुद्दे पर अच्छी तरह से ऐसी शाश्वत प्रतिभा मानव परंपरा में ही प्रमाणित होना पाया जाता है। तो आपने फाउंड लिखा था उसकी जगह एविडेंस, क्योंकि हम प्रमाणित को एविडेंस यूज करते हैं। एविडेंस, अच्छा ठीक है, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। एविडेंस ऑफ सच, ठीक है, I was just looking at found, ठीक है। Yes, and I was thinking of living talents is evidenced only in human tradition, ठीक है, that is found, okay, ठीक है। So I think we'll stop here. We are already 4 minutes over, but I thought that it's good that we have completed chapter 6. And any closing remarks, any comments from anyone? I enjoyed this session today, like the reading and so it was flowing very well, I think. I also think so. I think that this experiment has worked. So instead of using the earlier columns model, now we'll try more with this paragraph model. Reading a paragraph in totality conveys its meaning better. This is what I realized today. Good. Thanks for joining. If there are no further comments or sharing, then we can close the session today and let's meet again next Sunday morning. Thank you. Thanks for joining. Namaskar. Namaste. Thank you. Thank you. Namaste. Namaste. Namaste.